was based outside India. Looking back, हमेशा एक ख्याल, where does India stand now, and what is the future of India? We have top nations, जो top 10 nations में आता है. Number 1 है एक छोटी सी देश है जो साउथ अमेरिका में मौजूद, उसका नाम है पेरू, जिसका पॉपुलेशन इज अराउंड 3.5 करोड़, अराउंड 34-35 million people, the population उसका. That is the number 1 nation in the world at the moment. Number 2 आता है, it's another very small nation. It's smaller than Peru, which has a population of लगभग around 11 million, around 1.1 crore. That is the number 2 nation. Number 3 आता है Mexico, और number 4 पे आता है India. So there is always a question, India with such a large population. अब इंडिया का population कितना है, आबादी क्या है हमारा? We are more than 120 crores of population, 1.2, 1.3 billion crores. 1.3 billion, so that's considering कि हमारे इतने states हैं, प्रदेश हमारे countries में, and we have such a big population. What are the chances of India going to the top and becoming number 1? And I always tell people around the world, if there is a country that can become number 1, not just become number 1, but can remain at number 1 position forever, that is India. And लोग सुनते हैं, लोग समझते हैं, लेकिन इसके आगे क्या करना चाहिए? What need to be done back in our country in order to bring India to number 1 position? Recently, I was traveling throughout the country. We have Mr. Rafiq and the team had organized several meetings, and I could feel the potential of India. एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुका है कि India has no choice but to grow from here to newer levels of success. अभी number 4 पे है, but very soon India will become number 1. But what are the things that is required for us to become number 1? क्या strategies, क्या steps हमें लेने चाहिए? That is something that we all need to understand and we all need to follow. Now, I would like to share with you, some of the secrets for success. Maybe you can share the screen here, if you allow me. Yes, Manoranjan? Yes, sir. You can, sir. Okay, 1 second. So, can you see my screen now? Yes, sir. It's visible, sir. Now, ये सारी जो देश है जो अभी टॉप पे हैं, that those are the Latin nations actually. ये countries हमने इसकी शुरुआत की लगभग in the last 10 to 12 years. Peru started in 2010, Bolivia in 2012, Colombia is later. So in 10 सालों में these countries have come up to the top. Top 1, top 2, top 3 पे मौजूद है in terms of sales, in terms of recruitment. और ये जो सवाल है, सभी के दिल में, सभी के दिमाग में है. मैं जहाँ भी जाता हूँ, एशिया में ट्रैवल करता हूँ, I go to Malaysia, I go to Europe, I go to the Middle East, I go to the Arab countries, and everybody wants to know कि आखिर क्या है, क्या कारण है? What is the secret behind the success of Latin America? अभी DXN's global sales of almost 50% is coming from region of America, especially from Latin America. So आखिर Latin America understand. So ये क्या उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है जो लोग हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने घुमाते हैं और उनका सेल अपने आप keeps breaking its records? या फिर उन लोग कुछ करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी अपनाते हैं
और उसको रिपीट करते हैं और उनका सेल्स, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहता है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ये जानना जरूरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा लैटिन रेसिपी फॉर सक्सेस। यू नो, now Latin recipe now, it's not just a Latin recipe, but now it is a recipe for DX throughout the world. ये रेसिपी जो है बहुत ही important, बहुत ही it's a very essential recipe for everybody, every distributor in DXN to follow. ये जो रेसिपी है इसमें 5 तत्व है. It has got 5 key ingredients. और ये 5 तत्व equally important है for anybody, everybody to follow. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप क्राउड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक मिलियनर बनना चाहते हैं और आप कहते हो कि हाँ मैं इसमें से 4 तत्व तो फॉलो करूंगा लेकिन एक तत्व तो नहीं फॉलो करूंगा, so I'm sorry but you know that success is not meant for you. You are not going to be successful. You are not going to achieve freedom. आप फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे. तो आखिर ये 5 तत्व क्या है? What are those 5 key ingredients? These are very very important. Number 1 is what we call as passion. Now, passion, जो हम लोग कहते हैं जुनून. You meet any leader in Latin America, when you talk to them, they talk to you with a lot of energy. बहुत एनर्जी, बहुत ही एनर्जी के साथ बात करते हैं. You know, स्टेज में जाते हैं, you know, कि किसी के साथ, you know, like, they come across and explain the business to people around. They talk to people with immense energy. बहुत एनर्जी के साथ बात करते हैं. उस एनर्जी को हम कहते हैं पैशन, जुनून. सवाल ये है कि जुनून आता कहाँ से है? Where does this passion come from? Now, when I tell you where does this passion come from, I would like to tell you, I would like to share with you a story. एक कहानी शेयर करना चाहूँगा और ये कहानी है about the founder of DXN. हमारे चेयरमैन, हमारे फाउंडर जो DXN की शुरुआत की 1993, 30 साल पहले, उनकी कहानी शुरू करना चाहूंगा मैं. Dr. Lim, actually he's a technocrat basically. He's a you know, although you know, is a graduate in engineer जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन हासिल किए थे. but his keen interest, उनकी दिलचस्पी जो है जो है वो है towards herbs. Basically he always tells that I want to be a herbalist. But of course he's an engineer. He has immense knowledge in engineering. But apart from that, he's also having keen interest towards herbs, जड़ी बूटी में, plants में. इन्होंने DXN की शुरुआत की 1993 और उस समय उनका जॉब था मलेशियन गवर्नमेंट के साथ. He was an engineer. He was working with the Malaysian government. He was a civil engineer there. और उनका एक you know, he used to receive a salary too. Now at the time he started DXN because he had interest in Ganoderma और वो Ganoderma के बारे में उसका potential के बारे में अच्छी तरह समझते थे. And he wanted to bring the goodness of Ganoderma to the whole world. और उन्होंने DXN शुरुआत की और उस समय DXN was a very small company. बस एक गराज में शुरुआत की. स्टाफ नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन एक सॉलिड विजन था उनके पास और एक पैशन भी था कि करने का और करके सक्सेस हासिल करने का. बहुत लोगों ने उनको सुझाव दिया, उनको सजेशन दी, उनको एडवाइस करते रहे कि DXN एक वेंचर है, ये सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, आप इसे छोड़ दो, आप अपने काम में फोकस करो, which is engineering, which is a job that you have and you are getting an income. DXN से आपको कुछ इनकम मिल नहीं रहा है, तो आप उसको छोड़ के DXN अपने इंजीनियरिंग जॉब पे फोकस करो.
उस समय डॉक्टर लिम वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वेरी वेरी पैशनेट, वेरी एनर्जेटिक, और उन्होंने अपने दोस्त, अपने सगे जो भी है रिलेटिव्स, फैमिली, इन सभी के साथ बैठ के डिस्कस किया कि डीएक्सन का विजन क्या है और डीएक्सन क्या करेगा, क्या करना चाहता है. So he told about the one world one market system to them. He told them about, I explained to them about the one dragon company कि DXN एक ऐसी कंपनी बनेगी जो खुद मैन्युफैक्चर करे, कुछ खुद कल्टीवेट करे, खुद मैन्युफैक्चर करे, खुद अपने प्रोडक्ट्स खुद तैयार करे, उसके बाद we market by ourselves as well throughout the world. जब मीटिंग दिए, उनमें से एक व्यक्ति ने इनसे पूछा कि आपकी सोच क्या है, डीएक्सन को कहाँ ले जाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि in the next 10 years I want to bring DXN to 20 nations. अगले 10 साल में मैं DXN को 20 देशों में पहुंचाना चाहूंगा. और उन्होंने पूछा कि अभी DXN का क्या लेवल है.